Hi friends, welcome to my YouTube channel, Train Your Brain. Hello 3rd standard students, take out your maths test book. This is your maths period. Let's see this test book. Open first page. Maths, a complete course to learn mathematics. Standard 3rd by Manoj Kesari and Anuj Jain. Prepare and first unit is revision. So जो हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है उस सब का रिवीजन यूनिट फर्स्ट में होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर फर्स्ट रिवीजन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन न्यूमेरल्स. ये जो नंबर्स दिए हैं इनकी हमें स्पेलिंग्स लिखनी है. तो देखो फर्स्ट, रीड फर्स्ट नंबर 770, 115, 214, 357. तो स्टूडेंट्स आपको इन नंबर्स की स्पेलिंग्स ठीक से याद करके लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमेरल फॉर द गिवन नंबर नेम्स. ये जो नंबर नेम्स दिए हमें इनका नंबर्स में कन्वर्ट करना है. 257, 200 मतलब 100 के प्लेस पे आएगा 2, 57 टेंस प्लेस पे 5 एंड वंस प्लेस पे 7. सेम एज 344, 3 in 100 place, 4 in tens place and again 4 in ones place. 458, 4 in 100 place, 5 in tens place and 8 in ones place. Question number 526, 5 in hundreds place, 2 in tens place, 6 in ones place. Next question. Question number 3rd. Write the numeral for each of the following. First, 8, 600, 4 tens and 9 ones. इन्हें हमें न्यूमरल्स में लिखना है, यानी कि नंबर्स में. 100 प्लेस पे आएगी 6, टेंस प्लेस पे 4 एंड वंस प्लेस पे 9. क्वेश्चन नंबर 3, 7 in 100 place, 4 in tens place and again 4 in ones place. Question number C, 400s 1, 400, 0 in tens place. क्योंकि 400 से और टेंस प्लेस का नंबर हमें नहीं दिया है इसलिए 0 लिखना है और वंस प्लेस पे 1. क्वेश्चन नंबर डी, 200s and 8 ones. 200s means 2 in hundreds place. टेंस प्लेस का नंबर नहीं दिया है और 200 दिया है इसलिए 0 in tens place and 8 in ones place. Next question. Thank you for watching. If you like my videos, like, share and subscribe my channel.